First problem. Everyone can watch live Imagine Cup Regional Finals Day 3 on EDU TV. So we move on our first team after break for round 2. Team, kindly share your screen as well introduce yourself and your team. Hello, can you hear me? F17 BSCS 4048. Yes, sir. Okay, team, kindly share your screen and introduce yourself. जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कीजिएगा। सर शो हो रही है? जी हो रही है, थैंक यू। सर हमारा प्रोजेक्ट है एंटी वायलेंस सिस्टम। मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं रजा नवाज, फैज अहमद मुगल, मेरा नाम है और अफनान खान। सर हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट Also mention your university. सर FURC फाउंडेशन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कैंपस। सर हमारा प्रोजेक्ट हमारा प्रोजेक्ट सिक्योरिटी रिलेटेड है। पहले जो सिस्टम्स हैं वो सिर्फ सर्विलेंस करते हैं, सिर्फ उससे लाइव अगर कोई बंदा बैठ के देखे तो वही सर्विलेंस करता है बंदा। तो हमारे प्रोजेक्ट में एक ऐसा फीचर है कि जिससे हम कोई भी वायलेंट बिहेवियर होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई इस तरह का कोई वायलेंट बिहेवियर होता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। और प्लस पॉइंट ये है कि साथ गन्स भी डिटेक्ट हो सकती हैं। जिस तरह ATMs के अंदर होता है, अक्सर लोग गन वहाँ पे डिटेक्ट नहीं होती, आम कैमरा लगा होता है, कोई पता नहीं चलता सिक्योरिटी सिस्टम को। हमारा सिस्टम ऐसा है कि वायलेंट अगर बिहेवियर वो होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा और गन भी डिटेक्ट हो जाएगी। जिस तरह स्कूल्स होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनके पास अगर गन्स होंगी तो वो भी डिटेक्ट हो जाएंगी। तो पहले सिस्टम में ये था, कोई अलार्म नहीं था। हमारे में अलार्म हो जाएगा, एक बीप बनेगी और उसके बाद मैसेज भी जनरेट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी ग्रुप में प्रोजेक्ट में गन डिटेक्शन होगी, फायर डिटेक्शन होगी और अलार्म भी बजेगा लाइव सर्विलेंस के थ्रू। ये जिस तरह एक इनपुट इमेज है, ये इमेज के ऊपर है और इसकी आउटपुट इमेज ये होगी कि कोई भी गन होगी उसकी वो डिटेक्ट हो जाएगी और इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 94% तक आ रही है। ये सर एक वीडियो है जिसके अंदर ये डिटेक्ट हो रही है गन। ये हम इतना एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं अपना जिसके अंदर गन डिटेक्ट हो रही है। एक मॉड्यूल कर चुके हैं सर इसमें। यस सर। आप किस एल्गोरिदम के थ्रू डिटेक्शन कर रहे हो? सर हम उसके थ्रू जी आंसर कर दीजिए, आप किस एल्गोरिदम के थ्रू कर रहे हैं? फीचर बेस्ड कर रहे हैं या कोरिलेशन बेस्ड कर रहे हैं? सर क्लासिफिकेशन के थ्रू कर रहे हैं, YOLO V4। सर YOLO V4, कैन यू हियर मी? जी वी कैन हियर यू। ये जैसे फेसबुक पे लाइव वीडियो वायलेंस शो हुई थी लास्ट फ्यू इयर्स में, विल योर सिस्टम बी एबल टू डिटेक्ट दैट इन द रियल टाइम? यस मैम, इट विल बी एबल टू डिटेक्ट रियल टाइम में। गन भी डिटेक्ट होगी और फाइट भी डिटेक्ट होगी। और ये YOLO V4 से पहले इस पे काम नहीं हुआ था, ये हम फर्स्ट टाइम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये
ये हमारा ट्रेनिंग मॉडल है, ये हमने ट्रेनिंग करवाई भी है इससे। आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो? मैम योलो V4 यूज कर रहे हैं। आपने इस मॉडल को किसी और से कंपेयर किया है? यस मैम, कंपेयर किया, ये लेटेस्ट मॉडल है, इसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी आती है। कुछ कंपैरेटिव रिजल्ट्स दिखा सकते हो? सर वो मैडम वो अभी हमारे पास है नहीं कंपैरेटिव वाले रिजल्ट्स वो। ऑलराइट, आपका ये सोल्यूशन कंप्लीट है? यस मैम, ये जो आपको वीडियो दिखाई ये इसी मॉडल के थ्रू ये एक जनरेट मॉड्यूल हुई है हुआ मैम, और नेक्स्ट मॉड्यूल अभी जो फाइटिंग वाला वो अभी स्टार्ट नहीं। My last question is, Microsoft Imagine Cup की 4 थीम्स थी, आपका प्रोजेक्ट किस थीम एरिया पे मैप होता? हमारा लाइफ स्टाइल से हो जाता है क्योंकि हमारे लाइफ में ये सिक्योरिटी में आता है मैम। जी, थैंक यू। टीम कार्नी, लेट मी नो, क्या आप इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो योलो मॉडल की? यस सर, कर सकते हैं। सर ये देखें, जिस तरह अभी ये इमेज है आपके सामने, ये सर इसी से हमने जनरेट करवाई है जो इसका फाइनल रिजल्ट है। अब यहाँ पे सामने सामने 4 गन्स नजर आ रही हैं, ह्यूमन आई अगर देखे तो। ओके, थैंक यू टीम, यू मे लीव नाउ। सर ये हमें ओके सर। Okay, so we move on to our next team. Rimsha Khadim, can you hear me? रिमशा, क्या आपको आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है मुझे आपकी। ओके, काइंडली शेयर योर स्क्रीन एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरे ग्रुप मेंबर है सैयद वजाहत मशहूर, प्लीज उनको भी ऐड कर लें। Okay, let me know again your group members name. सैयद वजाहत मशकूर एंड हमना आबिद। जी, वजाहिद को ऐड कर दिया बट हमना लिस्ट में नहीं है। आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। टीम काइंडली शेयर योर स्क्रीन। स्टार्ट कर। जी जी, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम, I am Sayyid Jahad Mashkoor from MNS University of Agriculture Multan, and today I am to present the presentation over here. My team name is Inventors Tech and my team members Hamna Abid and Rimsha Khadim. Now it's over to you, Rimsha Khadim. Rimsha. मुजाहिद आप स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। स्टार्ट शेयर कर दिए मैंने। शो नहीं हो रही। अभी भी शो नहीं हो रही।
सर ये मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। स्मार्ट वाटर टैंक हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है, स्मार्ट वाटर टैंक जो हमारी इसकी प्रॉब्लम है, हमारी मेजर है, जो पानी को सेव किस तरह करना है, ये एसेंशियल नीड ऑफ लाइफ है हमारी। ह्यूमन बींग्स इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और सर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है हमारे होम्स वगैरह में, तो उनकी वजह से हमारे जो बहुत सारा पानी वो ज़ाया होता है, और जिसकी वजह से हमें लिमिटेड वाटर मिलता है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके लिए हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वॉल्यूम बताएगा वाटर का कि वो किस लेवल पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वाटर लेवल कम हो जाता है या फिर टैंकी हमारी ओवरफ्लो हो जाती है, तो वो एक अलर्ट जनरेट होगा हमारे मोबाइल ऐप पे कि काइंडली टर्न ऑन और टर्न ऑफ योर मोबाइल मोटर। तो यूजर जो है अपने मोबाइल ऐप से जहां भी वो मौजूद होगा, IoT बेस्ड फंक्शन है, उसके थ्रू अपनी जो मोटर टैंक है वो उसको ऑन ऑफ कर लेगा। और सर ये एक लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट है। इसमें हम टाइम रिसोर्सेज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टाइम और इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी सेव कर सकते हैं। और लोगों को पता नहीं होता कि टेक्नोलॉजी का सही यूज किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल हम जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, ज्यादातर लोग फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, मगर उन्हें डिजिटल लाइफ की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें सही एक आगाह कर रहे हैं हम कि आप लोग इसको टेक्नोलॉजी को इस वे में भी यूज कर सकते हो और अपना बहुत सारा जो पानी का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। यार आप थोड़ा सा अपने सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे? जी सर श्योर सर। ये मेथोडोलॉजी है हमारी। ये लग रहा है आपकी स्क्रीन ना स्टक हुई हुई है, हमें अभी तक वो सिर्फ टाइटल ही नजर आ रहा है आपके प्रोजेक्ट का। सर मैं तो स्लाइड मूव्स कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। एक दफा उसको दोबारा शेयर करके देख लें। ठीक है सर, मैं करता हूँ। सर अब शो हुई है स्लाइड्स? नहीं, स्लाइड्स नहीं शो हुई हैं अभी तक। जी अब आ गई हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू करें अपने सोल्यूशन की तरफ। मेथोडोलॉजी है शो हो रही है आपको? एक्सक्यूज मी सर, मेथोडोलॉजी शो हो रही है आपको? सर ये मेथोडोलॉजी इसमें बताई हुई है जो हमारे पास वाटर लेवल, फॉर एग्जांपल मैंने मिलीलीटर्स में यहाँ पे मेजरमेंट ऐसे दी हुई है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस जो है ना अल्ट्रासोनिक सेंसर का कम होता है, 8 मिलीलीटर से ज्यादा होता है, तो एक अलर्ट जनरेट होगा जो कि वैल्यूज भेजेगा नोड एमसीयू। नोड एमसीयू फिर उन वैल्यूज को भेजेगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, काइंडली टर्न ऑन टर्न ऑफ योर मोबाइल वाटर टैंक। फिर सर उसके बाद जो है अब जो यूजर की तरफ से फीडबैक जाएगा यहाँ से ऑन ऑफ का, अब वो यूजर ऑन करेगा अपने मोबाइल ऐप से। देन उसके बाद नोड एमसीयू पे जाएगी कमांड। फिर नोड एमसीयू से जो कमांड आएगी वो एच ब्रिज लेकर उस कमांड की पर्पस पे अपना जो पंप है उसको ऑन या ऑफ करेगा। अब पंप को ऑन कर दिया, देन उसके बाद ये वाटर टैंक फिलअप हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब वाटर टैंक फिलअप हो जाएगा फिर सेम कंडीशन इनपुट लेगा। अच्छा, ये आपने अभी सिर्फ इसकी कोई वर्किंग भी की है? ये सर वर्किंग 70% होगी हमारी। जो ऑटोमेटिक जो सेंसर वैल्यूज आ रही है ना वो हमने कर लिया है, ऑटोमेटिक टैंक ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब हम कहीं वो देख सकते हैं? जी सर वीडियो है मेरे पास। ये सर श्योर। सर मैं सर शो हो रही है आपको? No, we cannot see your screen. Now we can see it. ओके सर। सर यहाँ पे ये पूरा हार्डवेयर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है जो सोलर प्लेट से चार्ज लेंगे। ये बटन अपनी ईज के लिए किए क्योंकि अभी एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुई, तो उसके थ्रू ये 2 टैंक्स लिए हुए हैं। ये नोड एमसीयू है।
ये measurements, ये tank. सर उधर से मैंने बटन से ऑन कर दिया ना, अब ये फिल अप करेगा इसको. सर जैसे ये 8 यहाँ पे 1100 ml पे जाता है, ये ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि वाटर लेवल फुल फिल हो गया है, तो इसलिए अब पानी वेस्ट ना हो. जी सर. Okay, thank you. ठीक है. Okay. Okay, thank you, team. So we move on to our next team. Mohammad Rafi Faisal, can you hear me? Hello, Mohammad Rafi Faisal, can you hear me? Yes, sir, I can. Okay, share your screen and introduce yourself. Okay, sir. Sir, my screen is visible? Yes. And mention sir. your university name. Sure, sir. So my name is Mohammad Rafi Faisal and my teammate is Kabisha Anwar. And our project instructor is Dr. Jamil Ahmed Malkhani. And we both are undergraduate students here in Butams, Quetta. We are also affiliated with Control Automotive and Robotics Lab CAL from NCRA in Butams. Our project is vision-based smart decision for multi-terrain Vegroach robot. So let me tell you why we have choose this, what motivates us to choose this robot. Actually, people put their life at risk when doing search and rescue tasks, and you can show, as you can see in the graph, that the global death from the natural disaster increases every year. And you can see that in mining industries, because of in different mining industries like in gold mining, coal mining industries, there are several fatalities rate increases, and you can see in the graph as well. So the problem statement of our project is for search and rescue tasks, rescuers put their life at risk. So there is the need of autonomous and intelligent robot. Many robots fail to perform on uneven and harsh environment as well. There are some robots, but they are very much expensive. And the current research on our Vegroach robot is on locomotion and mechanical design. So what we so let me introduce you about further about what is Vegroach. A Vegroach is a bio-inspired robot from cockroach. Its name is derived from Veg and Roach. By Veg, it means it has a wheels. Its legs are combination of wheels and legs, and its locomotive designs and body gates are inspired from the cockroach. This robot is capable of moving stably, climbing the stairs, making a flip, jumping the gaps, and moving stably on rough terrains as well. This is a short video of University of Pennsylvania, those who have worked on it. As you can see, it is moving stably. यार ये तो स्टैंडर्ड वीडियो है ना, आप अपनी दिखाएं, आपने अगर कुछ बनाई है सॉल्यूशन. Yes, sir. Let me tell you what we have done. Actually, we have integrated intelligence in it with the help of Kinect Vision sensor, and with the, and this sensor scans the environment, and with the help of computer vision techniques, the robot take decisions accordingly. And software which we are using for it is Coppelia Sim, and we have also applied for the Ignite funding for our hardware. You can see this is our robot. We have implemented it in Coppelia Sim. We have placed a Kinect Vision sensor, and we are taking the depth images, and we are estimating the distance along with it, and the robot will then take smart decisions accordingly. And this is a small gig in which you can see it is moving forward. We have implemented these gates, moving backward, left gate, and the right one, and you can see it is climbing the stairs as well.
So some of the application, these robots can be used for search and rescue tasks, as well as it can be used for military purpose. Like in landmine areas, it can be used for surveillance, even for exploration and mapping tasks. Like with the help of SLAM technique, it can be used for mining exploration and even for space exploration. These robots can also be used for crop and field by integrating a robotic hand over it and sowing the seeds in the fields. Thank you, sir. ओके देखिए, आपने ये भी सिर्फ हमें रोबोट की कहानी सुनाई है, आप इस रोबोट को कैसे यूज कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है मैम, हमने आपको गिग में दिखाया कि हम गेट्स वगैरह का इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं और इसके ऊपर हमने इसके विजन सेंसर के जरिए हम सारे स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। लाइक वो गैप को, अगर कोई गैप आता है तो उसको जंप कर सके, एस्टिमेट करे डिस्टेंस उसका और उसको जंप कर सके। अगर कोई स्टेयर आते तो उसकी हाइट को एस्टिमेट करे और देन वो उसको स्टेयर को क्लाइंब करे। और जब वो उसी कैमरे की मदद से वो देखेगा मेरा टेरेन कौन सा है और उसी के मुताबिक वो अपना गेट भी सिलेक्ट करेगा। इसके डिफरेंट किस्म के गेट होते हैं, लाइक ट्राइपॉड गेट है, लाइक इसका वो गेट है वेव गेट है, इसका क्वाड रूपी गेट है। तो वो अपनी स्कैन एनवायरमेंट सारी विजन सेंसर की मदद से वो अपने गेट भी सिलेक्ट करेगा और उसी के हिसाब से स्मार्ट डिसीजन भी लेता जाएगा और जो रेस्क्यू जो उसका स्पेसिफिक टास्क होगा उसको वो काफी स्मॉल टाइम में परफॉर्म कर लेगा। तो ये जो सारे कंट्रोल्स की आप बात कर रहे हो, ये तो इस रोबोट के साथ आती है ना? नो मैम ये जो अभी जो ये असल में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एक यूनिवर्सिटी, उसने इस पे काम बहुत किया है। उन्होंने कि मैकेनिकल डिजाइन और लोकोमोटिव्स पे काम किया है कि इसके गेट्स को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाए मैकेनिकल डिजाइन पे। हम जो है सारा काम ये ऑटोमेट करना चाह रहे हैं विजन सेंसर की मदद से, कि वो डेप्थ इमेजेस वगैरह ले और उसकी मदद से सारा काम ऑटोमेटिकली खुद करे और जिसकी मदद से एक ह्यूमन इंटरवेंशन की भी कमी हो जाए। तो क्या डेप्थ के लिए आपको इसमें कुछ इसमें हार्डवेयर ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी? सर मैम डेप्थ के लिए हम इसमें काइनेक्ट विजन सेंसर यूज करेंगे और हमने इग्नाइट के लिए अप्लाई किया है फंडिंग के लिए। तो हमें जैसी फंडिंग मिली हम उसको उसी वक्त 3D प्रिंट करेंगे अपने रोबोट को और सेंसर वगैरह मंगवाएंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, thank you, team. We move on. Thank you, sir. Okay, thank you. We move on our next team. Aisha Rahman, can you hear me? Yes, sir. Okay, team, kindly share your screen as well as introduce yourself. यार आपकी स्क्रीन अच्छा, आप काइंडली शेयर योर प्रेजेंटेशन। Okay, so we move on to our next team. Maria Bibi, can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Okay, fantastic. So kindly share your screen and introduce yourself. ओके सर, मैं शेयर करती हूँ। जी आपकी स्क्रीन तो आ गई है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। Okay, sir. Sir, this is me, Maria Bibi, from Team Bigo 1. My teammates are Rasha and Alamira Sahel.
We are from Fatma Jinnah Women University and here to present our idea. We are developing an काइंडली एक Android दफा app अपने for प्रोजेक्ट का outdoor- नाम दोबारा बता दीजिएगा या स्लाइड पे चले जाएं। Yes. We are developing an app basically for outdoor ठीक है, sport ठीक है, activities. continue करें। And our app is outdoor sports assistant. ओके आइडिया बेसिकली ये है कि लेट्स सपोज हम लोग घर में बैठे हुए होते हैं और हम लोग फ्री हैं, हम लोग बजाय इसके कि जिस तरह नेट सर्फिंग कर रहे हैं स्क्रीन पे अपना टाइम जी कैरी ऑन। ओके ओके और फिर हम लोग इफ वी वांट टू प्ले बट वी डोंट हैव प्लेयर्स विद टू प्ले विद अस। अब इस तरह के कोई टेनिस है कोई बैडमिंटन है जिसमें हम लोगों को एक प्लेयर चाहिए होगा, और सिमिलरली अगर हम लोगों को कोई ऐसी गेम खेलनी है जो टीम गेम है इन विच वी नीड प्लेयर्स ऑफ टीम, तो उसमें हम लोगों को टीम चाहिए होगी। तो ये एक प्रॉब्लम हम लोगों के सामने अराइज हो रहा है। देन वी हैव कि अगर लेट्स सपोज आप एक लवर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, आप पैशनेट हैं, जिस तरह ऊपर मैंने बात की कि लेट्स सपोज आप लोग फ्री हैं तो आप खेलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बंदा है कि वो ऑलरेडी पैशनेट है और वो खेलना चाहता है बट ही इज गॉटन टायर्ड ऑफ प्लेइंग कन्वेंशनल गेम्स, तो वो कोई जिप लाइनिंग या पैराग्लाइडिंग टाइप कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है, तो फिर वो सर्च कर रहा है कि उसको कोई अपने एरिया में मिल जाए, लेकिन उसको नहीं पता कि कुछ हो रही है। तो अवर ऐप इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज थ्री मेन फीचर्स। मूव करें सॉल्यूशन की तरफ। जी जी ये स्लाइड आपको होप सो कि इट्स विजिबल। जी ठीक है, ठीक है, ओके आगे दिखाएं अगर कुछ अभी तक काम हुआ है कुछ। जी जी काम हुआ है वो वी आर कम विद स्क्रीनशॉट्स एज अ डेमो, वो मैं आपको चली जाती हूँ उस पर डायरेक्टली। ये जी हम लोगों का साइन अप पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव टू मेक द अकाउंट। हम लोग अकाउंट बनाएंगे और इसमें हम अपनी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी डाल देंगे कि मैं बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हूँ, और फिर ना कोई और बंदा आके बनाएगा, उसको चला जाएगा, अगर वो भी इंटरेस्टेड है ना उसी में बैडमिंटन में ही, तो देन यू विल गेट नोटिफाइड कि आपको वो आपका प्लेयर मिल चुका है। तो इसी तरह टीम बनाना चाह रहे हैं तो वो टीम हम लोगों के पास आ जाएगी। दूसरा फीचर ये था कि आप कोई इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं इस पे। ये लॉगिन पे हम लोगों ने किया तो लॉगिन हो जाएगा। तो हमारे पास दीज थ्री मेन फीचर आर मेनली दैट वी आर प्रोवाइडिंग कि आप अपने प्लेयर्स फाइंड कर सकते हैं, आप कोई इवेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो, और मेनली जो अब हम लोग इसी कंपेटिटिव एडवांटेज में कि हम लोग वेन्यूज भी प्रोवाइड करें। वैसे जो बेसिकली एप्स हैं वो वैसे ज्यादातर यूके यूएसए में और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है प्लेयो के नाम से है, लेकिन वो वेन्यूज नहीं प्रोवाइड कर रहे। हम लोग अपने इलाका में कोई स्पोर्ट की जो एक्टिविटी हो रही है ना, जिस तरह वो जिप लाइनिंग और पैराग्लाइडिंग वाली मैंने बात की, वो तो आप अपने इलाके में उस स्पोर्ट वेन्यू को आप ना कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें गेम प्ले क्या 1 by 1 में आपको इसका कराती हूँ। ये जिस तरह प्रोफाइल पेज है आप इसमें। ओके अलमीरा आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोल सकती हैं। सर मैं कह रही थी कि हमें हमारी वैसे भी लोकल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बताता है कि वेब से स्क्रैप करके, फॉर एग्जांपल पास्ट में हमारी क्या क्या लोकल स्पोर्ट्स इवेंट्स हुई हैं इस तरह से भी बताता है। ओके ये प्रोफाइल पेज है। फिर इसी तरह हमारे पास वो जो हम लोगों ने प्लेयर इवेंट्स और वेन्यूज का इससे सेकंड लास्ट स्लाइड में मैंने शो कराया था, तो प्लेयर्स के बटन के ऊपर जब आप आते हैं तो हमारे पास ये इसमें सामने डिस्प्ले आता है। इसमें हम लोग इनवाइट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं उस प्लेयर को। जो ये देखें प्रोफाइल शो हो रही है, प्लेयर्स शो हो रहे हैं जिनके साथ फिर हम लोग फिर आगे फर्दर अपना वेन्यू सेट करके और अपना स्पोर्ट लोकेशन सेट करके हम लोग उनके साथ खेल सकते हैं। देन क्रिएट इवेंट का हमारे पास एक पेज आ जाएगा, तो इसमें हम ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको डाल के हम क्रिएट इवेंट करेंगे। देन इवेंट में हमारे पास सेंड इनवाइट्स हैं जो हमने की हुई होंगी, तो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा तो हम लोगों को नोटिफिकेशन। अच्छा इसमें सिर्फ यानी इवेंट क्रिएशन ही हो रही है और आप लोगों को इनवाइट भेज रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ है एडिशनल? सर ये हमें लोकल स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में वैसे भी बताते हैं जो हमारे एरिया में हुई हैं, और हमें वेन्यूज भी ढूंढ के देता है। अब जैसे हमने गूगल मैप्स पे तो वेन्यू सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें हर स्पोर्ट कैटेगरी का अलग अलग सर्च करना पड़ता है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम्स नियर मी इस तरह की चीजें। तो इसके अंदर ये हमारे इलाके में जितनी भी स्पोर्ट्स के वेन्यूज होते हैं इकट्ठी सबकी लिस्ट पर हमें दे देता है, और उनके ऊपर क्लिक करके फिर हम उनकी वो इवेंट को आप ऐड करेंगे मैनुअली या खुद से कहीं फैच हो रहे हैं? सर ये जो इवेंट्स हैं एक तो हम वेब स्क्रैपर से स्क्रैप करेंगे लोकल वाली, और दूसरी ये जो इवेंट्स है इसके अंदर 3 टैब्स है ना इस इवेंट्स वाले पेज पे। एक है सेंड इनवाइट्स, तो हम जो प्लेयर्स को इनवाइट करेंगे ना तो वो भी इसमें इवेंट के तौर पे आएंगे। फिर रिसीव्ड इनवाइट्स में अगर उन्होंने हमें इनवाइट किया होगा वो वाले आएंगे, और ये अदर इनवाइट्स की एक और टैब है इस इवेंट पेज पे, तो उसके अंदर वो वाली आएंगी जो हमने वेब से स्क्रैप की लोकल वाली।
ठीक है, हमने कुछ पूछना, ठीक है। देन नेक्स्ट में ओके सर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं कह रही थी कि आगे और भी हैं स्क्रीनशॉट्स टोटल। क्विकली अगर गो थ्रू कर दें हम, बस आप नेक्स्ट करते जाएं हम। ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक हो गया, इनविटेशंस आ गए, रिसीव्ड हो गया, आगे नेक्स्ट चैट्स हो गई, लास्ट वेन्यूज है, वेन्यूज हो गए, ठीक है, वेन्यू की डिटेल हो गई। ऑलमोस्ट 99% फ्रंट एंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1/3 बैक एंड पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कैन वी लीव सर? कैन Thank you, team. You may leave now. Okay, we move on to our next team. Saiful Islam, can you hear me? Yeah, how are you? I'm fine. Team, kindly share your screen as well. Introduce yourself. Yeah, sure. Let me just ask my team to quickly join. Just a second. Okay, fantastic. Saiful Islam, kindly share your screen. My teammates are like waiting to be accepted into the meeting. Can you please just look at that, please? Tashik Moinshik and Hassan Zahid. Please repeat the names of your team members. Yeah, it's Hassan Zahid, Tashik Moinshik, mine Saiful Islam, and Hassan Berni. Is yeah, just a sec. Yeah, so I'll go over the slides and I'll be presenting myself. My name is Saiful Islam and I'm the leader of the team Taravas. And what basically we're trying to do with this project is give people a sense of idea and a unified kind of platform where people can have the education as a, like. Can you please share this presentation? Yeah, I'm sharing it as well. Just a sec, please. I've seen technical problems on my end. Sorry. Can you see it? Is my screen visible? Yes, share the presentation. Okay. Yeah, sure. So basically what we wanted to do with this idea is basically approach a different kind of problem that we all kind of faced within the early days of COVID and still do to this day. What that was basically finding a kind of unified platform where people can come together and teach. Yeah, it's called Terabus right now. We had an idea of... What's your university? We're all from Fastness and we all are in our junior year. Right, so basically the problem that we wanted to tackle with was we never really found out a kind of unified kind of platform where people can have a very
close kind of interactive meetings with the people who teach them. For example, there are many content creators and teachers on YouTube and other kind of platforms as that. But only the only level of interaction is through the text kind of version, and it's never that there are questions that we ever ask get really answered very quickly. Do we get actual insights and mentorship and kind of all the kind of fun stuff between the actual kind of learning process and the actual kind of unified platform. COVID-19 was just an accelerator to doesn't mean the end. It can be applied to a general kind of world, and we see that there's no idea or selection out there that actually uses a kind of idea and grows on it. So there's MOOCs, right? The MOOCs, there's online courses, there's Coursera, there's edX, and there's other kind of platforms. But the problem with them is, again, they have a simple discussion board. They just often don't even talk to the students. आप solution पे आ जाएं. Yeah, sure. I'll move on to the solution. So what we wanted to do was we wanted to make a kind of platform that emphasizes not only on education but on building communities as well. And so people coming together to learn a certain topic and meet each other and learn from each other as well, and not only from teacher but from others' experiences and how to talk and how to learn. It can be a good way of making money for people who want to create content and teach others what they already know and share experiences. It can be a way of sharing culture between peoples and different communities all over the world on how to think about problems. Because education is really about how people tackle problems rather than the problems itself. And so we thought about how would you validate this? We found out there are about 580 million students who have been potentially reached by online education 2020. We see that there are 1 billion more students right now who don't really have good education via the online kind of platform that we already have, and so there's an essential need for that as well. This technological growth, it promotes all of this as well. You can see that there's a good amount of market size. We see that there are hundreds and millions of people who upload content every single day on YouTube. We see there are ठीक है, आप दिखाएं आपने किया ये तो चलें हो गई ना सॉल्यूशन में कि ये बेनिफिट्स हैं, क्या बनाया क्या है आपने? जी, actually we have kind of already what we say, like the demo of the project. This is a gift, but let me actually show you in runtime what we have right now. And so this project basically talks about, just a second, please. This project is basically interaction. So as you can see here, I'm sorry. Yeah. So as you can see on the slide, we wanted to make a login page, and when you log in, you can actually go, you can post about content, you can write about content, you can follow other people, you can search about interests, you can put profile in your interest, you can make notifications, and then you can go to your profile, and then you can like and comment about other people. And so we want to take this kind of small demo, and we want to expand it for the idea of education as well. And so we're focusing on trying to making these into small communities. So this is a very MVP kind of style right now. And so we will focus on, let's say someone posts something about a project that has AWS in it, someone posts something about Azure on it, and so they can go to different target audiences and see who are creating content for a specific kind of platform wherever they are, right? And then they can show whatever it is. So this Team Terabus, what I understand from your presentation is you are making different communities of students, and then they are trying to make some business, right? Not exactly in a way. You can say anyone on a platform can quickly sign up and then can create content for others, and so they can in a way promote their own products if they have any, and in that kind of way they can have students who align to us. So there are many content creators out there who don't really actually follow a traditional way of teaching people. We already see that all many channels on YouTube. So we want to make a kind of platform where people have it very a quick, informal, but very interesting kind of development. Actually, Team Terabus, I'm trying to get the idea that what are you trying to solve? We're trying to solve the diversification of many platforms by putting them together into one that offers a complete solution to people. Okay, can you go back to your solution site? Yeah, sure. So this is the kind of we have. Yeah. So over here, you are actually registering different communities? Yeah. So we can have different communities based on different topics. So just like Reddit, we have different subreddits for different kind of topics and interests. We can do that as well. You are actually making different communities, and then these communities will gather to make some money. No. Okay. Again, these people can make money, but their main primary concern is
putting content out there, teaching others, and having a kind of balanced and more interactive user and teacher experience. Okay, all right. Thank you. Okay. Do you have any questions for us? No further questions. Thank you. Okay. Team, kindly let me know what's your top priority in next 6 months. Our next 6 months is completely figuring our current roadmap and working with different kind of structuring our whole project as a whole and figuring out what's technically possible for us right now and what's kind of limiting us for the moment. And so we want to quickly iterate over whatever ideas we have and put them into a fully fledged project that people can actually use on the internet. Okay, anyone else? Okay, thank you team. So हम एक short break ले रहे हैं. So participants stay on with us and join us after break. EDU TV पे आप live देख सकते हैं regional final day 3. Thank you. टेन्योर ट्रैक सिस्टम 2003 में हमने बनाया था HEC ने.